correct answer. Okay. So what we'll do is that I'll point out to anybody, okay? Because I'm the worst, I can do anything. So I'll point out to anybody and you just have to stand up, tell your name, and very quickly 2 of your strengths that you feel you have. Okay? Alright, we can do that. Everybody clear? I'll point out to anybody, you have to stand, tell your name and your 2 strengths that you feel you have. Okay? Okay. Great. Yes, ma'am. Dr. Kavita Sharma, and basically my strength is that I can relate myself to anyone like in any situation. And second thing is that I am having one passion to create an interest. Basically I have created that already and I am working for the ministries as well. Great. Thank you so much, ma'am. Thank you. So now the beautiful lady coming in the sari. Please, ma'am, tell your name and 2 strengths. My strength one is I love talking to people. I'm not hesitant talking to anyone. And second is I can take anything very positively. Okay, great. काफी positive psychology चल रही है. Nice. Okay, so there, many beautiful ladies. Yes, ma'am. Me? The one beside you, yes. Yes. Yes, ma'am. Myself Kusum Bansal. My strength is, I think so, where I go, I feel they all well positive. Okay. So you create the positivity? Yeah, Okay. I think so. Okay. And the other is always wants to be happy to all. Strength. Okay, ठीक है. Thank you. So that side, yes, you, ma'am. Please tell. Hi everyone, my name is Rajni and I think I'm very friendly. I can make friends. Okay. I like challenges. I like solving challenges. This is my strength. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay, so from here, yes, please. Yes. Hi everyone, I'm Mehvish. Yes. My strength is I easily make friends. Okay, so Celebrate somebody else. the lining up. Okay, so the creative minds are ready. Please welcome a big round of applause for these beautiful kids. Manjula madam, is the space enough or they want this space? Enough? नमस्कार। हम बच्चे प्रसन्न चेतक फाउंडेशन आजादी प्रोजेक्ट की ओर से आए हैं। हम बच्चे आजादी के लिए तत्पर हैं। आजादी अज्ञानता से, आजादी गरीबी से, आजादी शोषण से, सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो
आएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप ये पैसे लो, कल सुबह राशन और पैड लेके आना। ये ले अपना राशन। ये तो सिर्फ 200 रुपए या 100 रुपए का काम किया। 100 रुपए की मैं दारू पी गया। आपके पास दारू पीने के लिए पैसे, अगर बेटी के लिए पैड लेके आने के लिए पैसे नहीं है। जवान लड़ाई के मेरे से अपनी बेटी को कपड़ा यूज कर। क्या हुआ दीक्षा तुझे? मैं कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम दोनों को साथ में प्रैक्टिस करनी थी और हमारा कल स्पोर्ट्स का दिन भी है। अब पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है और मुझे अपने आप से बहुत घिन आ रही है। मैं समझ चुकी थी वाची, धर्म शुरू हो चुका है। मुझे भी 4 महीने पहले शुरू हो गया था। तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुझे कुछ समझ भी नहीं आया था, डॉक्टर ने भी बताया था। ठीक है मम्मी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अपनी बड़ी बहन के साथ चले जाओ। ठीक है। डॉक्टर जी, जो आपने मुझे बताया था वो मेरी फ्रेंड को भी बता दीजिए। इसको मासिक धर्म हो गया है। ये 9 साल से स्टार्ट होता है और 50 साल तक खत्म होता है। ये मेरी बहन, मेरी ये छोटी बहन को और मुझको क्यों नहीं? ये किसी को होता है, ये किसी को पहले होता है और किसी को बाद में। ऐसा क्यों? हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। जिसका शरीर किशोर अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है, ये पहले उसको ही होता है। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए पैड यूज कर सकते हैं। हम इतने ज्यादा गरीब है कि हम कहाँ से लाएंगे पैड? हमारे पापा इतना दारू पीते हैं, जो हमारी मम्मी पैसे भी देती है वो जुए और दारू में उड़ा देते हैं। हम पैड नहीं ला सकते। अगर आपके पास कोई और उपाय है तो हमें बताओ। आप कपड़ा यूज कर सकते हो। कैसा कपड़ा? नया कपड़ा, धुला हुआ, जिसे कभी पहना ना हो और धूप में सूखा हुआ कपड़ा। थैंक यू, आपने हमें ये बताया। राखी तू इतनी धीरे क्यों चल रही है? अरे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे तेज और मैं जा रही हूँ। हमारी अंधियारी दिल में बजी घंटियारी टन 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 टन। अरे तू इतनी धीरे से चल रही है, तुझे क्या हो गया? कौन सी बीमारी होगी? अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जाओ अपना काम करो, तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? अरे तुम्हारे पीछे दाग कैसा? कैसा दाग? ये कैसे दाग? चलो जाओ, तुम से कोई मतलब नहीं, भागो जाओ। चलो पकड़ो। मुझे छोड़ दो मुझे। इस बैग में क्या है? मेरे बैग में कुछ नहीं है, मेरा बैग छोड़ दो, मेरे बैग में कुछ नहीं है। भागो भागो भागो। हर चीज ऐसी ही यूं ही लड़कियों के साथ क्यों होता है? लड़कियां घर का काम भी करती हैं, बाहर वालों के ताने भी सुनती हैं, पतियों से मार भी खाती हैं। ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ? आप लोग यहाँ पे बैठ के तमाशा क्यों देख रहे हो? मेरी बेटियों का मन बदला, जीवन बदला, सेहत और खुशियाँ उसकी साथी बनी। अब वो पढ़ाई लिखाई में और खेलने कूदने में अव्वल आती है। थैंक यू। A big applause, audience. Thank you so much, kids. Beautiful performance and I think beautifully choreographed. So thank you so much, and I think thank you, Miss Manjula, for taking up this initiative. Thank you so much. All right. Now we would like to welcome Ms. Shivangi Bansal from Skill and Development Council for a beautiful performance. A big round of applause for her, please.
performance. I think a big round of applause from everybody. Beautiful performance. Thank you so much. And now I would like to call the Prasancheta's team on the stage for the felicitation. Please, I would like to welcome Mrs. Deepika Bahari to please come up on the stage and Dr. Baljeet Kaur and Dr. Pam Rajput to felicitate the creative minds. A big round of applause, guys. And also Ms. Manjula, please come up on the stage. Yeah, congratulations, सब बच्चों शाबाश. Very good. This is the first time they are on a stage like this. They are not trained before, like, absolutely. I mean, we started working also within 3 months ago. So, I mean, this was our first time also, but I think you've done a wonderful job. Wonderful. It didn't seem like that it was the first time. Great. And then last time also they came, the other group came, and they were so excited to see such a group, and yeah. So it's a pleasure for us, in fact, not for them. एक बच्चा and we also have some eatables outside for them. God, it's Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. The side headers. okay, no worries. मैं मगा. I'll So big shootout for these kids. Come on. Alright, so I'm hoping that you guys are enjoying the evening. Great. So it's never too early or never too late to work towards being the healthiest you. So Harleen, do you know what exactly health is? Yeah, health is about our physical well-being. Like जैसे कभी हम बीमार हो जाते हैं, हम कितने fit हैं, so that defines the health. But not exactly. Health is actually a state of complete physical, social and mental well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So does that mean that health is a resource to provide and support a healthy lifestyle, which can help us lead a life full of meaning and purpose? Exactly. And mental and physical health are probably the two most frequently discussed types of health. Spiritual, emotional and financial health also contribute to overall health. As a result of biological and cultural differences, both man and women have different impacts on health. So the health of women is of particular concern because of discrimination that is rooted in socio-cultural factors. According to a national health survey, nearly 13% women over the age of 18 are in fair or poor health. 1 in every 8 women will have breast cancer at some point. 20 million women suffer from eating disorders. Women are twice as likely to experience depression as men. So what do we do now? How do we create a balance between these aspects of our life with a firm base? To help us achieve these goals, Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, UT Chandigarh, is hosting a health conclave. This conclave aims to understand the meaning of life and health and how we can lead a healthy lifestyle.
So ladies and gentlemen, we are your hosts for the evening. My name is Anchal Sharma, President Wellness and Wellbeing Council UT Chandigarh. And I'm Harleen Bahari, Council Member UT Chandigarh. And on behalf of an organization that feels like a second home, it warms our heart to welcome you all to this thoughtfully constructed evening today. And a big round of applause for all you lovely people out here. So to kickstart the evening, I would like to invite on stage a dynamic lady. She has an extensive medical practice of 31 years, specializing in voluntary surgical spacing and emergence, comprehensive abortion care. And she has been an ardent advocate for safe practices for HIV/AIDS. Currently, she is holding the position of Directorate Department of Health and Family Welfare, Government of Punjab, India. She initiated the Health and Wellness Centers for Punjab, implementing the Government of India's flagship Ayushman Bharat. Her contribution has been phenomenal and enormously value creating. So put your hands together for the dynamic lady, Dr. Baljeet Kaur. We welcome you, ma'am, and the stage is all yours. Thank you so much. A very warm welcome to all of you, and I'm so happy to be amongst everyone here. I remember the day Deepika called me and we had an online session, and subsequently you decided on to this one-on-one interaction, and I'm happy to be here on the health conclave, what we call. So my younger colleague has already defined health, saying that it's a state of, what did you say? Yeah, it's a state of being completely healthy at the physical, that is the body position, at the mind, and also social well-being. So when we talk about all these three components, and then we forgot to say that it's not just mere absence of disease, that's what WHO says. So ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਥਾਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ, I am sure you all are well educated people. I have seen lot of my seniors and I met them in the audience. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ who are my super seniors, ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ working in public health, you keep meeting people, and that's how I have also learned certain things. So first thing, I'm not here to teach you anything, and I will not be giving you anything new. And everything is available everywhere today, and Google is everybody's mata. So मैं जो भी गल्लां करांगी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਟਿਟਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮਾਈ ਡੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ there is something called RBSK, that is ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਯ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, then there is something called ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਵਾਸਥਯ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, that is for adolescent health. Then you have, once you are an adult, you have programs for contraception, for spacing, for taking care of your reproductive health. Then you have programs for various communicable diseases ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। Then you have programs for non-communicable diseases ਜਿਹੜੇ hypertension, diabetes, cancer and all these things. And you have also programs for eye care, ear care and geriatric care. ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ
सारे लेवल ते सरकारी प्रोग्राम्स अवेलेबल ने और बर्थ सर्टिफिकेट तो डेथ सर्टिफिकेट तक कुछ जिहड़ा सरकार कवर करती है तो साडे कोल सिस्टम्स ने एक साडे कोल सरकारी सिस्टम है जिहड़ा डिवाइड होया होया प्राइमरी हैल्थ केयर जिहड़ा कि असीं पिंडां दीयां डिस्पेंसरियां ते प्राइमरी हैल्थ सेंटर कहने आ सैकेंडरी हैल्थ केयर जिहड़े कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर ने ते अपने कोल सब डिविजनल हॉस्पिटल्स ने ते टर्शरी हैल्थ केयर आ जाती है मैडिकल कॉलेज PGI एंड हायर इंस्टीट्यूशंस। हुण सिमिलर पैरल लेवल ते अपने कोल एक प्राइवेट सिस्टम है जिथे छोटियां डिस्पेंसरियां ने अपने घर दे लागे कोई डॉक्टर साहब मिल जाते हैं एंड दैन तुसी किसी वड्डे हस्पताल जाते हो एंड दैन यू गो टू समथिंग लाइक अ वेरी सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दीस फ्यू मिनट्स इज कि जदों तो असीं बॉर्न हुंदे आ तद तो लैके असीं जद तक असीं we are alive, there are provisionings within the government, outside the government, affordability range नाल असीं किते भी जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि असीं उत्थे जाने आ जे असीं जाने आ ते कि असीं उत्थे टाइम सिर जाने आ एंड टुडे since I was told by Deepika it is a women's conclave and WICCI, so I was thinking I will focus more on women's health. But I cannot just segregate a woman's health from a man because ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ society 'ਚ ਇੱਕ structure ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ अपना ख्याल रखती है एंड कई चीज़ां ये जी हैं जिन्हों सानू पता ही नहीं है कि असीं की करना है। मैं 2-3 छोटे एग्जाम्पल्स अपनी थॉट च लैके आंदे सी। आपां सारिआं नू पता है कि अपने लूण आपां आयोडीन खानी हुंदी है, पता है जी? ओके, सो सब नू पता है कि साडा लूण जिहड़ा है वो आयोडाइज्ड हुंदा है। ओके, सो एक लोगो हुंदा है आयोडाइज्ड नमक दा एंड कैन यू इमेजिन एक सिंपल चीज़ कि सारा लूण कदी देखिए पुराने जमाने च गले चन्ने मोटे मोटे गिल्लड़ हुंदे सी लोकां दे, राइट? हुण ओ गिल्लड़ हुण दिखदे ने नहीं दिखदे क्योंकि भारत सरकार ने सारा लूण आयोडाइज करता ते तुहाडे घर जिहड़ा लूण मिलदा है वो आयोडाइज्ड मिलदा है। हुण ओ छोटी जी चीज़ है कि 1 चम्मच नमक उन्होंने डिसाइड किया कि जे 1 चम्मच नमक असी रोज़ का मिनिमम सब जाने खा लेंगे हैं तो वो 1 चम्मच तुहानू जिन्नी डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन की मिल जाएगी। हुण आयोडीन यह जी चीज़ नहीं है कि मैं एक गोली हफ्ते की खा लूँगी तो चल जाएगा, रोज़ का रोज़ खाना पैंदा है, इस करके लूण च पा देता है, इस करके सानू खाना जरूरी है। पर वो लूण जिहड़ा है फैक्ट्री च बनता है तो उहदे च 30 ppm आयोडीन होंदी है, तां करके जद तक वो पैकेट साडे घर तक आवे उहदे च 15 ppm आयोडीन रह जाए तो जदों तक वो साडे खाने च होवे तो 15 ppm प्रिजर्व होवे। पर इंज नहीं होंदा क्योंकि जो पैकेट आता है असं उन्हें पैकेट को खोलते हैं, फिर एक डब्बे च पा लेंगे, डब्बे च नमकदानी पा लेंगे, नमकदानी गिला चिमचा पाते हैं तो गिले चिमचे तो बाद असी खाना पाते हैं तो जो खाना पकान लगते हैं उदों असी तड़के च पहला लूण पा लेंगे तो बाय द टाइम खाना पाते उदों तक लूण तो होंदा है पर उहदी आयोडीन उड़ जाती है। सो यह जियां सो उहदे नाल रिजल्ट की होया जी रिसेंटली मैम मेरे को आयोडीन प्रोग्राम आया तो मैंने रेड थ्रू द होल थिंग एंड असी जाके एक टेस्ट किया साडे अपने दफ्तर च असी सारिआं नूं कहा एक पाउच डिस्ट्रीब्यूट कर दिते कि अपने अपने घरों लूणदानी चों नमक लैके आना तो 40% सैंपल जिहड़े वो फेल हो गए क्योंकि आ छोटी जी गल करके। एंड नैट रिजल्ट की है कि ज़्यादातर इत्थे हॉल च कोई लेडीज़ है कि थायरोनॉम दीयां गोलियां खांदियां? एनीबडी? Okay, चलो anybody who can raise the hand. So there are enough. मैं भी खानी हूँ. Now what happens is कि because वो जो छोटी की चीज़ है कि आयोडीन दे नमक सेगा या सी बड़ा स्पेशल नमक खाना शुरू कर देता प्योर एंड आई डोंट नो 100 रुपए किलो ही नमक मिलने लग पे चंडीगढ़ च बड़ा डिजाइनर नमक मिलता है एंड ओदे च आयोडीन नहीं होती एंड देन what happens is फिर असी गोलियां खान लग जाते हैं।
So this is just one example. I'm sure you can educate yourself. Now coming to, like me and Dr. Rajput were talking, ma'am मेरे बहुत senior ने मेरे दिल चों सोल तो मेरा ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਮ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WICCI ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, and all the women are sitting here. You can clap for yourself and for all the ladies who worked so hard that today's day is here. Now you're seeing reproductive health ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ that I should be touching. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ menstrual hygiene ਤੇ. So a woman's challenge starts with this menstrual cycle. एक ladies नहीं होना, बंदियां नु नहीं होना. So all the challenges related to it happen to you. You are the one who's going to get pregnant. You are the one who's going to carry the baby. You're the one who's going to go through the labor pain. You're the one who's going to deliver the baby. You have to feed the baby and you have to raise the baby. And घर च जदों कोई बच्चा गलत करे ते किन्ने नहीं काम सिखाया मां ने, जे चंगा होनहार निकल आया ते ओदा सारा क्रेडिट जांदा है, राइट? सो ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ that is not doing justice to yourself. Like I was thinking of have you heard that sex ratio is disturbed in Punjab and Haryana and Chandigarh? Yeah. Do you really feel the sex ratio is disturbed? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ So, sex ratio disturbed है जी? Yeah, हैगी है? हैगी. Sex ratio disturbed ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ implication ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼? Yes. ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? बैलेंस रिक्वायर्ड है सोसाइटी. बैलेंस चाहिए. बैलेंस वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਓਕੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੈਵਲ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਗਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਗੇ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, and these are not the things that I'm quoting from my own figment of imagination. These are quoted things, researched and found out facts. One man gets married to a woman and that's shared with all the brothers, and subsequently they buy more land and that's divided between more brothers. They get a second wife and then they get a third one. At the end of the day, I mean, I get goosebumps, but tell me that who's the one who's suffering? It's the woman who's going through exploitation. So we have to see where all we need to take care, and we really need to. Can this gender issue be sorted out just by anybody? One person? Who is responsible? The whole mindset has to be The whole changed. mindset has to. Lot of times, we had saying doctors are responsible. They test ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ abortion ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ till late I heard in one of the Beti Bachao Beti Padhao, when it was launched by Mrs. Menka Gandhi long time back, she just put it like this: don't tell me that doctors ਕਰਦੇ ਨੇ, society ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ doctors ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. Now I would like to ask you ਕਿ why is it that you need a boy and ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਰਫ बैलेंस मेंटेन करने लिए? हाँ जी, फैमिली बढ़ाने के लिए. फैमिली तो बच्चा तो लड़की प्रोड्यूस करती है, नाम चलाने के लिए. हाँ जी. Sadly, ma'am, it's the women who wants the boy more. It's a woman who wants the boy. No.
Anything else? Family बढ़ाना, woman who wants the boy. और मुंडा कादे लिए चाहिए होता है? वंश चलाने के लिए. To take care of the parents. Support system. She doesn't believe in all that. Our ownership rights are biased in the sense. Men get more rights in terms of property rights. Not legally. Men get more rights in terms of property. She says not legally, and ma'am कहते मैं नहीं मानती, but there are certain things that ਆਪਾਂ ਨੂੰ believe करनियां पैणगियां. मेरे dad ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ time तक, and Dr. Pam Rajput will tell you that India did not have right for land registration in the name of women, which came very post independence. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਫ ਐਂਡ ਹਾਫ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? I don't think so. ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ. ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਲੈਵਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ, ਰੱਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਯਾ you can say that. मैं बड़े सालों तो you know why I started talking on this topic, ma'am, because I was given a national award for my work at Government of India long time back in early 2000s, and while they were handing over that little box or whatsoever, they told me आपको तो हम इनाम दे रहे हैं, लेकिन पंजाब में लड़कियों को मारते क्यों हैं? मैं क्या लो, इन्होंने मैंने प्राइज दिता कि नाल फटे में बैठा. So I thought I'll get back and start talking to people कि we do something on the gender issues, and that's how I started understanding and learning the things. Now अपने सवाल से, is there any girl कोई है जिसके ब्रदर नहीं हैगा, कलियां सिस्टर्स ने? मैम आ जाओ मेरे को. Yeah, please come. Ajo, yeah, only daughters, Ajo. Somebody who doesn't have a son or a brother. Yeah, Pachki, let us have a big running round. Yes. And we can clap for that. That's good. Wow. That's wonderful. We have so many of them. Wow, the stage is quite full. She's okay, that's cool. Come. थोड़ा अब फोटो क्वेश्चन चल रही है. फोटोग्राफर कितने हैं? Okay, so now what? I am also standing with them क्योंकि मेरा भी कोई प्यार नहीं है ना, मैं अपनी स्टोरी किसी दसा नहीं, so मैं eligible है उनके नाल खड़े होते. So मैम तुसी हुन अपना नाम दसना ते ये दसना है कि you have how many sisters? We 3 sisters. Don't have a brother? No. You have to tell some incident which you felt bad. Good. See, you all are successful. You all are good. Your parents are nice. That is why you are here. Your husband is nice. Your family is nice. That is why you are here. Otherwise, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਪੈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ. So tell us something which you felt bad about. Yeah, that's what I would like to hear. Good evening. A very good evening to all the lovely ladies here. There's a small incident that happened, I think, probably when I was in my school years, and it just stayed here, and it still stays here. Although I belong to a family that's pretty forward in the way it thinks, and I would say my parents have raised us beautifully, but still that incident happened at my elder sister's residence when my father was asked by a senior doctor, the Dr. Kapoor, you've never thought of adopting a son? And I was like, why is it even needed? And why are you even bothered? Does it matter to you? Are you responsible for raising us? No. When we are equals and we are raised as equals, why is it even a concern to you? So yes, it's just stayed there. I'm sorry on behalf of the doctor who asked this question. Good evening everyone, myself Dr. Richa, and I'm very lucky to have my daughter, and I'm thankful to him
क्योंकि ही इज बिग सपोर्ट. जब भी मैंने किसी ने बोला कि आपके पास बेटा नहीं है, एंड ही वाज लाइक मेरी बेटी बेटों से भी बढ़कर है. बहुत लोगों ने बोला. आप अभी भी मेरी एक चाची सास जी है, जब भी मैं जाती थी 2 दिन आप फोटो करो बस अभी. Thank you, and thank you, gentlemen, for supporting the film. Lovely. So let's hear it. Hello everyone, I am Educate Rani Bhuller, and I'm the only child of my parents. And whenever my father was asked, "Toda itne bachche hain?" he would say, "Sawa lakh," not one. And it was always has been a moment of proud for me. And now I've been blessed with one son. I wanted a daughter, but God's way. And yes, I have been feeling very bad and badly hit in the family. I'll not be wanting to name anyone, but saying कि प्राणी हैगा तो sport किमें है, कल्ले किमें बिताएंगी, किमें अन्नी जदाद संपेंगी, मुंडा ते चाहिए ही है, that kind of a thing, which was instilled, it kept clinching my mind, but then I overcame it, and I now am a promoter of women rights, thankfully. Hello everyone, my name is Jessica. I'm also an only child. So one incident that always bothered me was when my parents would be asked, "आपने और बच्चे के लिए try क्यों नहीं किया? कि लड़के के लिए try क्यों नहीं किया?" And I've been hearing that since I was like 5-6 years old. But the thing that made me happy about it was that my parents always responded कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत है, ये हमारे लिए वो सब करेगी जो एक लड़का कर सकता है. My name is Kavita Gupta. We are 2 sisters. I'm a single mom and I have a daughter. And the most moment was when, when I was expecting, and I went to the doctor. We are talking about brave women and the women's health today. Yeah, brave. Yeah. Brave. I went to the doctor. So my sister-in-law, she was also a doctor, and she said कि तो मैंने स्माइल करके उससे पूछा कि I was in 4th month, and she was saying कि मैंने उससे पूछा कि what is there. So she said, "Bichari, next time you can try another one." That time I know I had a girl. You are still crying. Brave lady, I think we need to give her a big round. And after that, I told them that women are not less. I take care of my parents. I raised my daughter alone. And today I have my standing. Wow, that's She's our senior from school and she's an inspiration. My name is Anubhuti Bansal, and I have an elder sister. She's almost 9 years elder to me, and it took a long time, between my sister and me, and people would always bug my parents about having a boy. But the incident I wanted to share is I recently went to a wedding. It was my cousin sister's wedding, my bua's beti, and there my fufa said कि अच्छा है एक ही लड़की है, नहीं तो और पता नहीं कितना करना पड़ता, कितना देना पड़ता, कितना लेना पड़ता. So I was very intrigued by that. And also something he says is to my father is कि in a very sensible words I'll put it, कि who will cremate you. That is the words he puts forward, and that really, and my father says कि बेटियां हैं कर लेंगी. So yeah, that's something I wanted to share. Hello, I'm Ramneek, and one of the 3 daughters of my father. Well, till I was at my father's home, I never faced any problem, frankly. We were raised as equal as sons. In fact, when my father would hit me and my grandmother would say कि ऐसे लड़कियों को कोई मारता है, तो he would say लड़के ही लड़कियां दोनों एक ही है मेरी. But it was when I was about to get married that my husband's nani mentioned it in their family, that when you get married and when you go to that house, who will serve you?
I just didn't understand that you would have wanted a brother for your wife so that he serves you when you go home. Well, and to you, we three daughters cremated our father. That's And we did not, my father was very clear in that these daughters are my sons. Today I have for her dad. Yeah. And for her. Yeah, I had a son and a daughter. My son passed away. A lot of people came and told me, you can still try. Well, I'm going to carry the legacy. My daughter is equal to my son. You have to be a brave girl. She says, I want to start crying. I want to go downstairs. You can't cry. It's okay, cry. Yes. Hi everyone, my name is Shashi and I just want to share something like that. I never felt like that ki what is the difference between girl and boy. I'm a single child and I haven't raised like that, like this is what you have to do. I don't know ki ladki ko kya karna hai ya ladke ko kya karna hai, right? And everybody was talking about father and daughter bond. So my dad also passed away 5 years back and I also cremated him. Before, even I did that for my dad. Yeah, please come. Hi, I'm Kanika. So एक इंसिडेंट है, my grandmother's friend. She met me at मंदिर और मेरी मम्मा खड़े थे और मैं और मेरी सिस्टर खड़े थे और मेरे डैड. So she generally asked, उनको पता नहीं था कि 2 daughters हैं, तो she asked कि है तेरी, की होया तेरे? तो मेरी मम्मा कहती मेरी तो 2 कुड़ियाँ हैं. तो कहती ओहो कोई नहीं हौसला रखी. एंड शी लिटरली सेड ओहो कोई नहीं हौसला रखी. उनका हौसला रखी, क्यों हौसला रखी भाई? पापा क्यों हौसला रखी? प्राउड नहीं होंगे थे आंटी कोई ना, मेरी तो कुड़ियाँ हैं, मुंडिया तो कम नहीं है, मुंडिया तो बद के ही हैं. सो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं. Brave parents. Hi, my name is Gurpreet and I'm the eldest of 3 sisters. So when I was born, it was a very happy occasion for my family and simultaneously my sister was born, not welcomed very well. And then when my third sister was born, I was very young so I don't know, but from what my mom told me, there was somebody who came and told them, you know what, why don't you sell her to us? And there was this another one who's like, oh, you already have 2 daughters, just give us one of them because you don't need like 2, 3 daughters. What are you going to do? They're going to be such a burden on you. And then continuously when we were kids, so because when you're young, people don't know ki kuch banegi ladkiyan hai kya hai. So people would be like, jolly bichara hoti to 3 thi hai, unno kaun sambhala. But now that we 3 are well educated, they see us doing well, they're like, oh, jolly thi to mode ban gaya thi. So yes, these are some things that did happen, but they have subsequently changed as well because of our parents, because of the family and the kind of women that we're surrounded with. So, yeah, thank you. Hello, good evening everyone. My name is Parmeet Devgan. Luckily, I have 2 daughters. And when I gave birth to a second daughter, my family, they were bitterly crying. Oh, kudi ho gayi hai. As usual. So there are lots of incidents we are facing, like I am facing day by day because I don't have son and my brother-in-law, he has 2 sons. So there are lots of incidents. If we are counting, they are uncountable. So me and my husband, we are raising our daughters very beautifully and thanks to God. Like my brother he told me that मेरा पुत्र आज ये करके आया, मेरे पुत्र ने आज ये थे इस national level ते गया. Even my daughter, she is also doing very good. मेरी daughters बैठी हैं, तुसी realize करा रहे हो कि he don't have son. So my husband, I was facing to my husband कि उन्हों दी अखां च हंझू आए कि तुसी उन्हों realize करा रहे हो. तो then I spoke to him कि no, ऐदा दा कुछ नहीं हैगा. We have 2 daughters, not an issue. अगर ट्राई करना होएगा आप इन फ्यूचर ट्राई भी कर लांगे, बट मैनू नहीं लगता हैगा कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्राई करने की लोड़ है. And one is a 8 year and second one is a 2.5 year. और जो 2.5 year है, और my God,
वो मुझे तो काटनी है कि वो कहेगी मम्मा मैं पिन नहीं लगानी है बाय लुक That's great. Thank you, ma'am. Yeah. Good evening, all. I myself is Dr. Lisa. My husband is also doctor. My father-in-law he was also doctor. I have two daughters. One has done computer engineering and masters from London. Second has done MD medicine from sector 32. We are happy. We have never thought about the boy. No one in the family has thought about it. Anything in your life that gave you a bad feeling? ऐसी मेरे सच में नहीं हुई कभी नहीं हुई. Congratulations on the family. Please sir, I can. Hi, I'm dietitian Madhvi. I have a very mixed reviews about it because when I was pregnant, तो my maid, I would really use the word सट्टे लगे हुए थे उस टाइम तो मेरे बच्चे पे किडनी में गाय ऐसे बाय भाभी ना सीढ़ियाँ चढ़ लेती है गाड़ी चला लेती है बोले ओके मतलब अच्छी बात है मेरी बिल्ड ऐसे कि आई एम वर्किंग टिल माई लास्ट डे ऑफ माई प्रेगनेंसी चलो जी सी सेक्शन हो गया बेबी गर्ल हुई दैट टू शी वाज ऑन दिवाली तो जी लक्ष्मी आई है लाइक वाई अगेन अ बाय स्टेटमेंट कि अब दिवाली वाले दिन होगी तो लक्ष्मी आई है नहीं तो पहले सट्टे वगैरह लगे हुए थे कि लड़का ही होगा दैट वाज प्रीटी श्योर एंड मेरे घर में बुजुर्ग थे तो फोन गया कि जी भाभी की लड़की चल झूठे वाइस तो अगेन मैंने देखा है सी सेक्शन का बच्चा दिखाया मुझे उन्होंने इट्स अ गर्ल एंड it would say after an ages my father is having no sister now my daughter Inaya ties Rakhi on my father's hand so it's an achievement simultaneously I loved it I got a very mixed opinion about it. Yeah, sir. Now you have come in the end, you will get the chance. Hello everyone, I'm Dr. Aditi. We are a jolly good family, 2 brothers, 2 sisters, so and I have 1 daughter right now. So overall everything is fine. My dad and my mom brought us very well. The thing that actually used to hurt me while we were growing up, we belonged to a very small city with limited resources, a family, struggling family. He would pay extra attention to the daughter just because of the fact that he had to settle her well so that eventually she would not be in trouble. So a father doesn't only have to worry about the daughter till she is married, he also has to worry about her when she gets married so that if she has a good job, if she settled down well, she'll be respected well in that family also. That is a tough thing for a father or a parents to do. Now secondly, I have a daughter. We were pregnant. I was pregnant, so we always used to discuss क्या होगा. So my husband used to say बेटी हो गया तो एक बार में काम खत्म नहीं तो दूसरी बार भी प्लान करना So I'm a strong supporter of working women, of everybody, and what I feel is that we don't have to be in an organization to be support to the other women. We can be support to the people around us, maybe our helping hands or everything, and that way even big organizations will have lesser work to do and we can do our individual things together. I think Hello everyone, good afternoon. We are 3 daughters of our father and when I'm the 3rd one. One thing that has stayed with me forever is few years back I had an accident actually and it was quite bad. The chances of survival was quite few, you can see I have still some scarring left. So when I recovered and I came back home, people were like, तो क्या हो गया? एक चली भी गई तो 2 तो है ना? So that thing is going to I think stay with me forever that is the cost of a girl's life, that's nothing. People are going to say, okay, and what if I was a son and if I had that accident? So that thing I think we still have very much to change. Yes, so that is going to stay with me always. Dr. Gopal, I just want to say one thing to all the esteemed. I have got my 2 daughters. As Lisa, no, I don't have sons. So then you are eligible to talk. Lisa has already spoken, that's why I'm just adding to this. We should not have any kind of a gender distribution like this. What you are feeling like that my daughter is like a son. This should not be the sentence. Daughter is daughter. You have kids. You don't specify that she is a daughter, he is a son. You have the kids and you have to raise the kids.
मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक सीरियल देखा, हमने सबने देखा होगा, धूप किनारे आता था एक सीरियल, सबने देखा होगा, पाकिस्तानी सीरियल था, उसमें जोया वाज की, तो उसमें उसके फादर एक बहुत बड़ी एडवाइस करते हैं, उसके साथ में उसके टीचर को बोलते हैं, कहते हैं मेरे जहन में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल ये आता है कि बेटियां, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, अपनी बेटियों को कहा प्यार देना चाहिए, जो चाहते हैं उनको देना चाहिए, उनको कभी भी महरूम नहीं रखना चाहिए. दिस इज द ओनली मैसेज आई वांट टू शेयर. So just telling about myself, we are two sisters. My sister is a principal of SR Government College for Women at Amritsar, and I am here before you. And yeah, बड़ा emotional issue होता है, लेकिन जब मेरे father, मैं अपने पापा दी property सारी inherit की थी है, मेरी sister दे नाल half and half. तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ gifts ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਵਿਦ ਆਲ ਥੀਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀਜ਼ who have, yeah, that's cool. I can't hear. Yes. हम सब आ रहे हैं क्या? सारे आ रहे हैं? देख लो डांस के पीछे कोई रहना चाहती है. All the best. Don't forget. इस सारे इंसिडेंट के अंदर सॉरी हेलो एवरीवन, इस सारे इंसिडेंट के अंदर एक चीज मैं रियलाइज की है, ज़्यादातर जिन्होंने भी लोगों की ओपिनियन या रिमार्क्स दिते हैं, एनीज बुआ, दादी, चाची, नानी, सासे, मैं तुहानू सबनू रिक्वेस्ट करांगा, ऑल लेडीज हियर, एटलीस्ट तुसी प्लेज करो कि असी कदी अपने मुंह तो इहो जिहे वर्ड नहीं कटांगे अगे तो. It's my bad. जी, and second, let us make it a light moment. मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने 2 बेटे है, असी घर बैठे थे डिनर कर रहे थे, तो मैं भाभी नू कहा, मैं क्या भाभी तुहाडे 2 पुत्र है, कहते भैया रब चुन चुन के बदले लेंदा, जिन्हों के 2 मुंडे मुंडे होंगे हैं, कहते एक नू सैट करो, दूसरे नू सैट करो, विआह करो, वोटियां भी बराबर दी सोहणियां होणियां चाहिए, एक दे घर तो इन-लॉज आ गए, उन्होंने अगर गोपाल दी मिठाई आई है, दूसरी अगर गोपाल दी नहीं आई, घर झगड़ा हो जाना, अगर उत्ते 4 डिश आईयां, इत्थे 3 आ गईयां, तो झगड़ा हो जाना. इसलिए डोंट वरी, बॉयज कोई वो नहीं है, माहौल घर का अच्छा होना. जिस घर च लड़की नहीं है ना, उस घर च आत्मा ही नहीं है. We should start clapping and not stop till such time that our lovely ladies are back on the floor. Yeah, keep clapping. So souls of the day. Yeah, keep clapping, keep clapping, keep clapping. Yeah, keep clapping. Yeah, please say. Someplace I met an Ayurvedic doctor. He shared a wonderful thought that ये जो टेस्टिंग होती है, बेसिकली ये टेस्टिंग जो है फीमेल फेटिसाइड को बढ़ावा दे रही है. Okay. रीजन बिहाइंड कि चुपचाप टेस्टिंग होती है, अबॉर्शन हो जाता है. जी. क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इसको हम लोग ओपन करें. जी. उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन हो कि इट इज अ डॉटर. जी. ठीक है ना. तो जब ये ओपन होगा तो कोई फीमेल फेटिसाइड करवा ही नहीं पाएगा. जी, बहुत अच्छा आइडिया है. काफी लोग दे चुके हैं, लेकिन सरकारों के लेवल पे इसका डिसीजन होना है, सो आई कैन नॉट डिबेट ऑन दैट. बट ये सारा जेड़ा सी सब दे एक्सपीरियंसेस सुने,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, what I wanted to say when we say that healthy body, healthy mind, and then it's not just the absence of disease. So if you are causing pain to others, if you are causing little bit of distress to others, kindly watch your words before you speak, and that's one way of creating healthy environment around all the women and around the entire society. There is so much that I can keep talking on and on and on, but ladies, no, मेरी एक request है, ਜੇ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਚ। ਓਕੇ, ਯਾ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ। My name is Subir. ਹਾਂਜੀ, Subir. and your daddy's name? Manpreet. Nana ji's name? Harpreet Singh. And daddy's name? Baljeet Singh. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ? Ajit Singh. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ? Vinder Singh. ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ? Fateh Singh. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਵੰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗਿਵ ਅ ਬਿਗ ਕਲੈਪ ਫॉर see now, coming to the basic thing that women do to their own self, I'll just conclude in the last 2-3 minutes. We are reduced ourselves to a vagina and a womb. ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲਾਈਕ ਕਮਲਾ ਬਸੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜਾਈਨਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਅ ਵੂਮਨ। ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਈਵਨ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ when you talk, ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਡਰੇਪਡ ਡਰੈਸਸ ਤੇ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਮੈਟਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੋਨਸ ਜੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀਡੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਾਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨ women are equal half of the society. Are we the equal half? I would like to tell you that remember, you are the half that sits in the foundation. ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ leave the rest of it to Dr. Pam Rajput. She is a very eminent person. She's fought for so many women's rights and at so many places. I am sure that the anchors will introduce her. But ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ 100 ਭਾਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ
मैं ਤੁਹਾਡੀ full time fan ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਾਂ and with this I'll request everybody ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ please ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ life 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰਸ ਯੂ ਆਰ ਆਲ bright people you are all the important people in the society and it does make a difference you are the people who can make the difference we all together can make a difference thank you Thank you for such an amazing and insightful session, ma'am. In a very subtle way, you made us understood the value of equality and how sex ratio determines life and the importance of iodine and the concept of menstrual hygiene. Thank you. I think once again, a big round of applause for ma'am. It's always a pleasure hearing you out, ma'am. And I think very beautifully done the activity where we got a lot of lovely insights from you. Thank you so much. And now I would request Mrs. Deepika Bhari, President WICCI Chandigarh, to please come up on the stage. A big round of applause for ma'am. And I think we all have suffered through the time period of pandemic, and I think health professionals have actually worked hard in this time period and have served the patients in these tough times. So we would like to acknowledge the work of the health professionals. Health professionals who have emerged from the crisis of pandemics as heroes, and we are indebted to you. And now I would like to call upon stage our guest speakers, Dr. Baljeet Kaur and Dr. Pam Rajput, to felicitate our heroes of the pandemic time period, the health professionals. A big round of applause for Dr. Baljeet Kaur and Dr. Pam Rajput. So our first health professional out here, Dr. Aditi, dermatologist from AIMS. Please welcome Dr. Aditi. A big round of applause for Dr. Aditi. Dr. Lisa Joshi, please ma'am come up on the stage. A big round of applause, guys. Come on, they all have worked hard in this time period. Next person, Dr. Apurva Sethi. Please ma'am come up on the stage. A big round of applause for Dr. Apurva Sethi. तालियां रुकनी नहीं चाहिए guys, come on. Mrs. Seema Gupta. Please ma'am. Please ma'am come on the stage. Thank you. Miss Shelly Sharma. Mrs. Himika Ghosh. Miss Kamna Duggal. Miss Meenu Mahajan. Miss Sangeeta.
पीछे हो जा थोड़ा। हेलो बोलिए पीछे हो जा थोड़ा भाई, फोटो फ्रेम से पीछे हो जा। Come on, this side तालियां नहीं आ रही है. A big round of applause for Miss Himika Ghosh. A big round of applause for Miss Madhuri. हेलो And we love your green teas. And Madhuri, we love your green लाइव भी teas. करना है, आप सर से पूछ लो ना, उन्हें से लग कर दीजिए, लग कर दो लाइव कर दीजिए, कर दे A big round of applause for Miss Sangeeta. Miss Kanika Takiar. This is the mental health council. So this council will keep We are here to keep you happy. Miss Paraspreet Kaur. A big round of applause for Miss Kanika Takiar. Miss Nausheen Kaur. A big round of applause for Miss Paraspreet Kaur. Miss Nausheen Kaur, Miss Niharika, please come up on the stage. A big round of applause for Miss Niharika. And last but not the least, Miss Aanchal Sharma, psychologist. Congratulations. She is working with Fortis and she is a great psychologist. Now we would like to call upon our partners. So the first one is Smile Designers. They are based in Sector 9 Chandigarh. They are specialized in Invisalign braces. So put your hands together for Dr. Apurva Rana Sethi. A big round of applause, guys. Smile Designers. People, I can see people. So lovely people in the gathering. A big round of applause for Dr. Apurva Sethi. And next, Fido Pharma, the exporter of nutraceuticals. They're launching a brand soon by the name of Meet Bhutan, entering into retail industry, manufacturers of biotin and nutraceutical enzymes. Please welcome Ms. Abha Viscote. A big round of applause for ma'am, please. The next one is Pivot Implants. They're India's one of the biggest dental implants manufacturer, having a very hard-working workforce. Please welcome Mr. Manpreet Bhatt, MD Pivot Implants. A big round of applause for Mr. Manpreet. And next we have on stage is Parijay Genius. Thank you, ma'am, for giving away these beautiful fresh plants which you're taking away today home, people. So please welcome Miss Ekta Gupta. So on behalf of Miss Ekta Gupta, ma'am is coming up on stage and taking a big round of applause for Miss Ekta Gupta.
And now our media partners, A&B News, thank you for the live coverage of the whole event. We would like to call upon stage Mr. Rakesh Gupta. Okay, and News Online, Mr. Satish for the live coverage on news. Okay, so both are working hard. They're outside. Mr. Satish. A big round of applause for Mr. Satish. A big round of applause. Yes, so everyone who got the rewards, please stay because our honorable chief guest will be here soon, so we'll get the pictures again with him. Thank you. And we have our last award. We have a very special award for a very hard-working lady who has been day and night handling the social media in the very perfect way. आपको सर बात तो शुरू हो गई कर दिया A team is well curated by its team members and Wellness and Wellbeing Council has proved it right. Put your hands together for Miss Jessica Garg. And also the President of Wellness and Wellbeing Council, Miss Anchal Sharma, for the mastermind behind it. And I just want to say one thing. I am very, very proud, and trust me, she is one hard-working lady I have never seen. So thank you for believing in us. Not my award, but for Arjun ma'am, Kanika ma'am, and the entire council. Jessica, I want to just put a word for her. Mother's Day, we all were enjoying with our family, roaming about, taking gifts, and she was compiling all our videos which the WICCI members had sent overnight. And Leaders are always comfortable. I would like to thank her because she's my mentor. Very good. Okay, and the last word, very quickly we wind up for the anchors, Aanchal Sharma and Harleen Bhari. Miss Harleen Bhari, a big round of applause for the beautiful lady. Yes, thank you so much, Dr. Baljeet Kaur, Dr. Pam Rajput, and Mrs. Deepika. You want to say something? Let me take over. Let me introduce him. Ma'am, introduction is required. Frankly speaking, बलजीत जी ने इतनी ऑड सिचुएशन कर दी है मेरे लिए कि मैं सोच रही थी कि पीछे का दरवाजा कहाँ है और ये मेरी इंट्रो की जरूरत नहीं है ये आपका स्टेटस कहता है जस्ट व्हेन आई कॉल्ड हर एंड आई व्हाट्सएप हर इनके व्हाट्सएप का जो स्टेटस हम लगाते हैं लिखा है नो स्टेटस सो दैट इज ह्यूमिलिटी दैट इज ह्यूमिलिटी What briefs it? आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया Okay. So our next speaker, ladies and gentlemen, Dr. Pam Rajput, who has made tremendous contribution towards holistic well-being. Dr. Rajput is an Indian academic turned internationally renowned activist who has been engaged in the women's movement since the 70s, both in India and internationally. A recipient of many academic fellowships, she is a member of several expert committees and bodies like Ministry of
Women and Child Development National Commission for Women Delegation to the UN Commission on Status of Women. She is also the founder and director of Center of Women Studies and Development and the head of Department of Political Science at Punjab University. And it's an honor to have you here, ma'am. Now I would request you to please take over the stage and enlighten us with your valuable insights. In absentia, I would like to address the chief guest. Dr. Baljeet, the previous speaker, and a great friend of mine, Deepika Bahri, the president of WICCI, members of the WICCI, and all the councils present over here, particularly my dear ones on the corner. Don't forget to join me for a cup of tea. Well, friends, it's an honor to be here this evening. And I not only want to thank the organizers for this conclave and inviting me, but I want to congratulate them. That the theme for this conclave today, health, is very critical. बलजीत जी ने अपने तरीके नाल बहुत गहरियां गहरियां गल्लां में जे कमाते जे पंजाबी च मैं कहां बहुत गहरियां गल्लां कहियां तुहानू हसा भी दिता ते हकीकत नाल तुहानू एक बारी फिर तो क्या कि सोचो कि सिचुएशन की है इस तो पहले I am going to be talking a little serious. But before I really, I begin, I would like to salute the people from medical profession, 70% of which we know, not nationally, but globally also, were women. And I salute to them the kind of service they did to humanity during the COVID period. Please raise a hand to appreciate that. And of course, I feel very happy that WICCI has organized, recognized them. Thank you, Deepika, for thinking about that. Well, I'm going to share my just random thoughts. But we cannot forget, we have not overcome the impact of COVID. Impact of COVID on the lives of women, the livelihood of women, and the unpaid care and household work that women did back home, and how their reproductive rights were affected during COVID period, to which Baljeet was to talk, but she did another good job. And so while we are talking today of, building resilience, recovering from whatever has happened, right? It is very, very important that we look at everything from gender lens. बहुत ज़रूरी है. और एक बात याद रखिए
कि जब हम बैठते हैं और सिचुएशन को देखते हैं, you and me don't represent the women of India. चंडीगढ़ की महिलाएं रिप्रेजेंट नहीं करती हैं इंडिया। और मैं आज जो बात कहूंगी, 2-3 बातें कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी कि टाइम काफी हो गया। वो हकीकत पे बेस्ड होगा। मुझे मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाई लेवल कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का चेयर करने का। I was chair of that committee for 3 years. We have brought out a report. It's available on the website of WCD. उसमें भी health का chapter है, but I'm not going to talk what we wrote over there. But what I'm saying is कि जो बात मैं कहूँगी वो किताबी नहीं है, वो अपनी आंखों से देखी हुई है। क्योंकि उस दौरान भी वैसे भी मुझे शौक है, चाहे वो देश हो चाहे देश से बाहर हो, घूमने का, लोगों से मिलने का, इंटीरियर में जाने का। तो उस कमेटी के दौरान बहुत इंटीरियर घूमा है हिंदुस्तान का। तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं मैं आपको उससे शेयर करूँ। और मैं इसलिए भी विक्की को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हेल्थ का इशू चुना गया। आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम which is held every year in Davos comes out with a report every year. It is known as Global Gender Gap Report. और उसको मैं हर साल देखती हूँ और अच्छी तरह से पढ़ती हूँ उसको। तो भी जो 2022 में रिपोर्ट आई है, 4 पैमानों पे हम देखते हैं कि गैप जो है विमेन का कहाँ है। Among the 146 countries that reported this year, and we have the report, India ranks at 135. That's a separate issue. लेकिन 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर लेकर के चलते हैं: इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ। मैं हेल्थ पे आती हूँ। Where do we rank as far as health is concerned? Any guess from here? Among the 146 countries, where do we rank? Chocolate for that wellness well-being. concept. That's why I'm looking. I'm asking the young people, I really want them to know it. We are at the bottom. 146th position. We are at the bottom. जो 2021 की रिपोर्ट थी, तब 151 कंट्री ने रिपोर्ट किया था, तो मैं खुश थी, कम से कम हम चाइना से ऊपर हैं। जैसे पाकिस्तान का मैच होता है ना, हम दुनिया से हार जाएं, पाकिस्तान से नहीं हारने चाहिए, और फट से ताड़ियां बजाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जब वो मैंने देखा, अच्छा चाइना 151, हम 150 हैं, ठीक है, एक कंट्री तो पीछे है। बट दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली वी आर एट द बॉटम, 146 among the 146 countries as far as the health is concerned. Now friends, I will not go into the question whether they are the right methodology to give us that rank or whatever. That is immaterial. But the matter of fact is that health is a serious issue in this concern. It's a serious issue for the state, it's a serious issue for the society, and it's a serious issue for the corporate sector as well. And again, my young friend who was comparing in the beginning, they gave a definition that health doesn't mean this. I go with her, absolutely. To me,
Health is a human issue. Health is a human rights issue. Health is a societal issue for that matter, and we have to think about that. Now, I will not go into other details to say that I want to take a very holistic perspective of health. जब आप ये बात करते हैं तो हमें holistic perspective जो है health लेने की ज़रूरत है, और उसमें बड़ी सारी चीज़ें आएंगी, but today I just want to touch couple of things, and before that I want to say that health is also a pointer of multi-dimensional aspect of poverty. जब तक आप हेल्थ को डायमेंशन पॉवर्टी से नहीं करेंगे, आप हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपकी पॉलिसी जो है नहीं बन पाएंगी। और ये हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट ने PhD किया, and that is on feminization of rural poverty in Punjab, which came out so clearly, this health as a dimension of poverty. And I just want to give the example of this. I was touring and we were near Dehradun. और जब देहरादून के पास पहुंचने वाले थे तो गाड़ी हमने रुकवाई चाय पीने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान जो गया वो उस तरफ गया कि सड़क के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। औरत तो बिजी थी, बट व्हाट डू आई फाइंड कि कुछ चीज पड़ी है और उसके ऊपर मक्खियों का ही ढेर लगा हुआ है, मक्खियों। मैंने कहा ड्राइवर को, देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे मक्खियां। नो एंड बिहोल्ड इट वाज ए गर्ल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री, राइट। तो पड़ी है, माँ काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो लड़की थी तो ठीक है, वो डिसेंट्री उसकी चली जा रही है, मक्खियों के ढेर ऊपर चले जा रहे हैं। And so you can imagine here there are two aspects. One is poverty, and other is our socio-cultural norms, where you do not value the life of a girl, right? तो ये जो second aspect है कि society में we are discriminated. I'm using the word we are discriminated. I wish मेरे को भी बलजीत जी ने वहाँ खड़ा किया होता तो मैं भी आपको अपनी कहानी बताती, फिर कभी बताएंगे। And it is rooted in our socio-cultural factors for that matter, and the whole thing to have access to health services. Last but not the least, we have what we call as a transformative agenda developed globally. जो अखबार में आप पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल 3 इज ऑन हेल्थ, राइट, एंड गोल 5 इज ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वेयर अगेन हेल्थ अपीयर्स, द रिप्रोडक्टिव SRHR अपीयर्स वेरी वेल। लेकिन मुझे जो लगता है, और I was present in the United Nations when this agenda was adopted. ओबामा जी थे, मोदी जी भी थे, सब थे, एजेंडा अडॉप्ट हुआ। और वहाँ पे जो कॉरिडोर्स में बात चल रही थी कि ये एजेंडा तभी पूरा होगा अगर हिंदुस्तान में पूरा होगा। If India is able to achieve the sustainable development goals by 2030, then the world will be able to, otherwise not. तो जब उन ग्रुप्स में होते हैं ये बात आप सुनते हैं तो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि अपने मुल्क में ये क्या। तो लेकिन उसका एक जो मंत्र है which I always share everywhere I go. The mantra of this transformative agenda is no one shall be left behind. I repeat, no one shall be left behind. If that is the mantra, what about that girl who was lying on the roadside?
What about that girl when I go to Odisha, in those tribal areas, where the woman doesn't have even half a piece of cloth to cover her body? What about her health? What about her health and the health of her children? ये स्कीमें बहुत हैं बलजीत जी, and long you can talk about that, but go to the remote areas. सब पर थोड़े छोटे छोटे डाल के वो कर रहे हैं. Even you know Fab India, जिसकी आप इतनी इतनी महंगी चीजें जाके बाजार से खरीदते हैं. जब हम गए एक गांव में बिहार के, तो उनके पास वो जो चीजें बना रहे हैं, जो फैब इंडिया इतना प्राइस लेकर के आपको बेचता है, वो बनाते हैं, लेकिन उनके पास अपने पास उस दिन जब हम खड़े थे एकदम बारिश आ गई, तो वो बजाय हमें रिसीव करें, हमसे बात करें, उनको ये था कि हम ये चीजें कहाँ संभाल लें. Think of that poverty. So health is directly related to, so that is like the multi-dimensional aspect of poverty. So बहुत सारी बातें, I'll just focus briefly on 3-4. One is malnutrition. The second is menstrual health, which our children presented so beautifully. And third is mental health, and fourth is aging. मैं इन चीज़ों के ऊपर 2-2 मिनट लेकर के आपका मैं चाहूँगी कि आपका ध्यान इन तरफ जाए, क्योंकि आप फील्ड में इतना काम करते हैं. तो ये जो malnutrition है, there is what you call as intergenerational cycle of malnutrition. आप डॉक्टर्स हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, पर अभी भी अगर आप ये देखें डाटा जो है इस वक्त जो है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th आया है, उसमें 4th से बढ़ गया है. राइट, malnutrition बढ़ गई, anemic बढ़ गया, और as I said it is a what you call as मेरे ख्याल इस वक्त जो बढ़ के आया है, कितने % women anemic हैं, जो 57% women in the age group of 15 to 49 are anemic for that matter, and children 67.1% children are anemic. कोई जमाना था हम कहते थे पंजाब तो दूध क्यों था, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप जाएं तो anemic rate is as close to बिहार, you know that अभी the state पंजाब का, चंडीगढ़ के villages में more than 75% children are anemic in the villages of Chandigarh. More than 75% anemic. और ये intergenerational है, because when the mother is anemic, she will give birth to a child which is of weight उसका कम होगा, और जैसे जैसे बढ़ेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, बच्चा stunted होगा. Why is it that the percentage of stunted children is so high in our country? Malnutrition. तो वो जो stunted child है, उसकी psychological problems होंगी, उसकी morbidity की problem होगी, और ये life cycle चलता जाएगा. और अभी भी हमें पता है कि 23% girls जो है under the age of 18 they get married, and then you can imagine, you know, what implications it has in terms of malnutrition. So malnutrition is something, a very serious issue that we need to address, whether it is in terms of policies or in terms of, you know, your CSR, और हमारी स्कीमें हैं जिनको आप पोषण 2 कहते हैं, या ये जो है सक्षम आंगनवाड़ी हैं, but still we are not really able to hit that, and it is a serious problem for the country. And second is menstrual health. तो menstrual health बच्चों ने बड़ी अच्छी तरीके से, I felt so happy that that was the theme that was chosen. पर इसमें क्या है कि it is not merely, you know, कि होता है ये जैसे explain कर दिया. It is physical, it is psychological, and it has also social dimensions. From menstrual to menopause, I will not
स्टॉप हियर फ्रॉम मेंस्ट्रुअल टू मेनोपॉज पीरियड तक, और इतना स्टिग्मा है इसके लिए, मतलब ये लगता है कि सिर्फ यही नहीं है कि ये हाइजीन की बात है, और यही नहीं है कि हमारी स्टडीज कह रही है कि बच्चे का स्कूल छूट गया, यही नहीं है कि बच्चों के स्कूल में टॉयलेट में पानी नहीं था, you know, all those things are there. Let's go to the remote areas where in the schools now under the Swachh Bharat you have the toilet but you don't have the water, right? So water, sanitation, all is, तो पैड मिलना एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी आप इंटीरियर में जाए, it is a stigma. It is a stigma. My friends from Himachal would tell me कि जब अंदर वाले जो गांव हैं ट्राइबल, उनमें ऊपर चले जाएं तो उनको जब बेटी की ये होती है तो शी हैज टू स्टे पुट, जहाँ पे वो गाय भैंस बांधते हैं आज के दौर में भी, एंड इट इज नॉट अनट्रू ऑफ द इंटीरियर और रिमोट एरियाज ऑफ यूपी और रिमोट एरियाज ऑफ बिहार, यू गो एनीवेयर। बचपन में हम देखते थे कि हमारी माँ कहती थी कि अच्छा तुम्हारा साया पड़ जाएगा, पंजाबी में ये कहते थे अचार रखा हुआ है इसके पास मत आना, अचार खराब हो जाएगा। यू नो दोज नोशंस जो हमारी सोशो कल्चरल है, तो ज़्यादा तो ये है कि उस लड़की के लिए कितनी अंदर से उसको स्ट्रेस, डोंट थिंक नियरली ऑफ इट, हाउ मच स्ट्रेस शी हैज दैट शी हैज टू हाइड इट, किसी को पता ना लग जाए कि आई एम डाउन। सो वो जो स्टिग्मा है, जो उसको समझा जाता है, घर से बाहर रखा जाता है, फिर वो नहा के आएगी, फिर वो पूजा करेगी, think of that. Of course, you know, in big cities and now the TV also is coming up with serials and all, but this is an issue that we really, you know, need to address, that both menstrual health and because it is not medical, it also has psychological, socio-cultural dimension. और इसी के साथ जुड़ी हुई है मेंटल हेल्थ। हम सब यहाँ कहेंगे कि हम सब नॉर्मल हैं, frankly speaking, सब कहेंगे हम नॉर्मल हैं, but matter of fact is majority are not normal. I challenge it. वो एक कॉलेज में जाती है, सुबह टीचर सच खा के बढ़िया सी साड़ी पहनेगी, राइट, लिपस्टिक लगा के जाती है कि किसी को पता ना लग जाए, घर में रात को वो पिटी होती है। I am not naming the persons, I am stating the facts. वो पिटी होती है रात को, रोई होती है रात को, और उसके ऊपर स्ट्रेस हो रहा होता है कि मैंने जाकर के सवेरे लेक्चर भी देना है, or am I going to do that lecture? So mental health जो है, again is, you know, it is not merely biological, ये जो stress है, violence है, अभी one of my students is doing a PhD on this, कि डोमेस्टिक वायलेंस को तो हम सिर्फ वायलेंस समझ लेते हैं, केस लगा दो, FIR करा दो, या उधर काउंसलिंग में थोड़ा जाओ, you know, तो सेंटर्स आर देयर, बट nobody thinks about the mental pressure, the torture that he has, you know, felt. Nobody talks about. But of course, the WHO says don't think of mental health merely as a biological kind of a thing. There is a social model also that you have to look at it, and that social model is कि कैसे जो है आप अगर उसको सोशल मॉडल से ही नहीं समझोगे तो आप मेंटल हेल्थ को डील कैसे करोगे। सो इसलिए उसकी जो ये सिचुएशन है, nobody wants to go to a clinic. अगर मैं टेंशन में हूँ तो मुझे बलजीत जी कहें चलो आप पीजीआई साइकेट्रिस्ट को जाने हैं, वो मैंने जानता है, will I go? Why will not I go? लोग कहेंगे पागल है। ये मेंटल को आप वैसे नहीं समझेंगे। हमारी साइकी समाज की कैसी है कि पागल अच्छा उनकी बीवी पता उत्थे गई सी कि तुहानू पता है, राइट? सो यू विल स्टार्ट कंसीडरिंग दैट। तो उस स्टिग्मा से मेरे चाहिए कितने अच्छे डॉक्टर फ्रेंड होंगे, तो मैं कह सकती हूँ डॉक्टर साहब मैंने किसी ने गल करा दो भी कोई दसन, कोई मेडिटेशन दसे, कोई गोली दसे ताकि मैं वो करा, बट आई विल नॉट, आई विल सफ़र बट आई विल नॉट, राइट? तो इसलिए ये जो मेंटल हेल्थ का मुद्दा है,
हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, मेंटल हेल्थ की पॉलिसी है, बट ऑल ऑफ अस रियली नीड टू स्टडी दैट डजंट लुक फ्रॉम द जेंडर लेंस। बात ये है कि महिला के नजरिए से क्या बीतती है महिला के ऊपर किस सिचुएशन पे, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ डिप्रीवेशन, राइट, और इट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लाइवलीहुड। अभी कोरोना में जब हुआ सब कुछ, वो घर बैठ गई औरत, उसको बच्चों को रोटी भी खिलानी है, और उधर से जो पढ़ी लिखी औरत है उसको दफ्तर का भी काम करना है, उसको स्कूल बंद है, स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाना है, you know, all that kind of stress that she goes into. So there are various dimensions, physical, biological, violence that takes place in the society. कई चीज़ें हैं, और हो सकता है किसी ने कहा था कि ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ये भी एक बड़ी चीज़ है। अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया तो आप क्या किसी से बात करेंगी? आप नहीं बात करती। Men would still talk, women will not talk. So there are many dimensions, but what I want to emphasize is that mental health is equally important than other, you know, like other this thing. इसीलिए लास्ट जो मैं पॉइंट में कट शॉर्ट कर रही हूँ, बहुत कुछ लिखा हुआ था, पर बलजीत जी ने इतना हंसा दिया, आप इतने बोर हो रहे होंगे, और मुझे लगा कि भाई पॉइंट बड़े जरूरी है गल करने, मैं हंसा सका या ना हंसा सका, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। देखो हंसना बहुत जरूरी है फॉर हेल्थ, एंड आई विल मेक यू लाफ बिफोर इट। तो एजिंग आने से पहले मैं, अभी किसी ने मुझे ताज़ा ताज़ा वीडियो भेजा था, शायद कल या परसों की, वो राज्यसभा की बात चल रही थी, फैमिली कोर्स पे डिस्कशन हो रही थी। सो द जेंटलमैन हु वाज स्पीकिंग वाज टॉकिंग अबाउट कि फैमिली कोर्स में ला रहे हैं तो ये भी लाना चाहिए। नो, एजिंग इज नॉट ए क्राइम, it is some natural phenomena. Something grows, it has to grow old, and then go. लेकिन अगर आप अपने बूढ़ों को घर से उनको इज्जत से नहीं रखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का कारण बनते हैं, उनको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप नहीं अटेंड करते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, समाज हो, स्टेट हो, इट इज अ सीरियस इशू। आई नेवर फॉरगेट, वो कल जो राज्यसभा में बोल रहे थे वो ओल्ड एज होम की बात कर रहे थे। लॉन्ग टाइम बैक आई हैड गॉन टू कलकत्ता एंड आई वेंट टू ओल्ड एज होम। देयर वाज अ वेरी वेरी ओल्ड लेडी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कितनी देर मेरा हाथ नहीं छोड़ा। क्योंकि उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं उसकी पेन जो थी, मोर देन द फिजिकल, उसकी ये पेन जो थी मैं समझ सकती थी। वुड यू नॉट कंसिडर इट एज ए हेल्थ इशू, राइट? तो आजकल बड़ा फैशन शुरू हो गया है, बड़े मॉडर्न ओल्ड एज होम बनते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दोस्त, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ दूसरे हैं, पर जो घर है वो घर है, राइट? इसलिए क्या हम सोच सकते हैं कि व्हाई डू वी कंसिडर अवर ओल्ड पीपल एज डिसफंक्शनल? वो उनको फंक्शनल यूटिलिटी, घर में ये जो फंक्शनल यूटिलिटी है कि वो बच्चे को चाहे कुछ करना सिखा रहे हैं, इवन दैट इज फंक्शनल यूटिलिटी। तो जैसे ही वो ओल्ड एज रिटायर हुए, ठीक है, उसके बाद हम सोचते हैं कि उनकी लाइफ खत्म। अब मुझे कोई कहे कि मैडम आप तो 80 ईयर्स के हो गए, आप चुप करके बैठ जाओ, ठीक है, मैं क्यों बैठ जाऊं भाई? इफ आई कैन सर्व द सोसाइटी, if I can serve by people around me, why shouldn't I? I may be paid, I may not be paid, that is not material. It is material for my own health, material for my own well-being,
But supposing I am not able to think, shouldn't you think for me? Isn't it the duty of the state? Isn't it the duty of the society to think about, and isn't it the duty of the young children to think about them? Why not? Right? तो इसलिए एजिंग को जो है एक हमें नेगेटिव फैक्टर नहीं लेना चाहिए, एक पॉजिटिव फैक्टर को लेते हुए कि आज जब हम बात करते हैं 75 साल आज़ादी के, ठीक है, तो देयर आर पीपल हु प्लेड देयर रोल एट दैट टाइम. तो ये आपको आज़ादी आपकी आज वजह से नहीं मिली है. दे आर ओल्ड नाउ. वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम. वी हैव टू गिव देम देयर ड्यू फॉर दैट मैटर. तो आप जो कुछ बने हैं आपकी पेरेंट्स की वजह से बने हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से बने हैं, जिसमें मदर की सेक्रीफाइस ज़्यादा होती है. वो खाती सबसे बाद में है, सोती सबसे बाद में है. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम पढ़ते थे, हमारी माँ तो सारी रात ही जागती रहती थी. किसी को 3 बजे चाय चाहिए और किसी को 4 बजे चाय चाहिए. राइट? क्योंकि हम कोई कितने बजे सो रहा होता था, कोई कितने बजे सो रहा होता था, तो सबको किसी न किसी वक्त लग चाहिए होती थी. तो वो बेचारी जाग रही होती थी, बिकॉज शी वॉज एन अनलेटर्ड वुमन एंड शी थॉट माई डॉटर्स मस्ट गेट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन. Now today I forget that mother who said I will not, अंगूठा छापने में बनूंगी. उन्होंने हिंदी में आहिस्ता आहिस्ता सिग्नेचर करने सीखे. ठीक है. और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो किसी से मदद लेकर के उन्होंने मुझे एक इंग्लैंड लेटर लिखा. और वो माँ थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जब बॉम्ब गिराए गए और वो सायरन बजता था, तो वो उसमें जाती थी सुरंग में. राइट? सुरंग में जाती थी. जैसे ही हुआ कि अब वॉर खत्म हो गई, या शायद वॉर खत्म नहीं हुई थी, एक जहाज जाएगा इंडिया. राइट? अब फादर वाज इन आर्मी, तो उन्होंने किसी तरह इंतज़ाम किया कि ये बच्चों को लेकर के चली जाए. And that was the last thing. After that, the entire territory was bombarded by the Japanese. और वो हम 5 बच्चों को लेकर के, जहाज वालों ने एक पेंसिल तक नहीं पकड़ने दी कि वेट बढ़ जाएगा, पर उन्होंने एक घड़ी छोटी सी ऐसे मुझे उठाया हुआ था. माँ बताती हैं कि ऐसे रख ली ताकि रास्ते में टाइम देख सके. और वो चिटागोंग पहुंची. टोटल ब्लैकआउट था. सब बच्चों को कहा हुआ था साड़ी पकड़ के रखना, कोई बच्चा इधर उधर ना हो जाए. वो माँ थी जिसने कपड़े सिल करके हमें पढ़ाया. कपड़े सिल करके पढ़ाया. She was a proud mother, as I am a proud daughter of my mother. तो इसलिए जब वो ओल्ड एज हो, मैंने जिंदगी में आई हैव नेवर बीन टू ए टेलर. शी स्टिच्ड माय क्लोथ्स. और वो रोती थी कि मैं चली जाऊंगी तो तेरा क्या होगा. बट शी वॉज वेरी हैप्पी दैट आई डिड नॉट मैरी. अगेन आई वॉन्ट टू टच दिस इशू कि मुझे बहुत खुशी है तूने राइट डिसीजन लिया कि तुमने शादी नहीं करी. और मेरी माँ मेरे साथ रही आखिर तक. तो एजिंग जो है, इट इज अवर गुड फॉर्चून दैट वी हैव पेरेंट्स विद अस who can continue to look after you, continue to give you unadulterated affection for that matter. Unadulterated affection for that matter. इसलिए जो मैं आज हूँ, कल मैं किसी ऑनलाइन पे थी तो एक लड़के ने पूछा, मैम आपकी स्ट्रेंथ का राज क्या है. I said the feminism I got from my mother. That is my spirit. Right? So मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा, ये ना कहें कि लड़कियां लड़कों की तरह हैं. लड़कियां लड़कियां हैं, लड़के ह्यूमन बीइंग हैं, लड़कियां affectionate हैं. They can do anything on earth. Nothing can stop them. And the last, that is why when my mother passed away, तो हमने कहा भाई
जब सारी उम्र माँ बेटियों के पास रही, हमारे भाई थे वो अमेरिका में थे, तो इस वक्त कंधा भी हम ही देंगे, अग्नि भी हम ही देंगे, और मुझे विश्वास है कि मेरी माँ स्वर्ग में है। With these words, friends, I want to say that there are dimensions and dimensions of health. और इसलिए ये कहना चाहूँगी कि जो इकोनॉमिक्स वाले लोग होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सोचते हैं, राइट? Women, if they are healthy, they are as much contributor to the economy of the country. They are as much contributor to the GDP of the country. So whether she is working in the informal sector, she is working in the formal sector, or she is working in, absolutely the unpaid household care, the calculations are there now that they are contributing to the GDP. So a strong woman and strong women make healthy nation, both economically, socially and politically. So let us give priority to the health issues of women as we celebrate the 75th year of independence of the country. A strong woman, a strong nation. Thank you very much. Thank you so much for such an insightful session, ma'am. How beautifully you explained the importance of holistic health, transformative agendas, and sustainable lifestyle. And I think beautifully explained the last concept of aging. It really touched, I think, all of our hearts, right? So again, a big round of applause for Dr. Rajput. And I promise to all of you for a cup of coffee remains. 2 cups of coffees. And also, I think embracing the differences, which just ma'am said, that, girls are girls and, boys are boys, men are men, ladies are ladies. So I think embracing the differences that we all have. So yes, on this Independence Day, 75th Independence Day, thank you so much. And also, we just received the message from our chief guest, Honorable Speaker Haryana Assembly Shri Gyanchand Gupta ji. Due to some unavoidable political commitments, he won't be present with us today, though he congratulates our guest speakers, our awardees and Team WICCI for the beautiful event of the evening. And I think a big round of applause for our Honorable Speaker Haryana Assembly Shri Gyanchand Gupta ji. He is not present here, but we can definitely give him a round of applause. Thank you. And now I would like to call upon stage Mrs. Seema Gupta for a word of thanks. Please welcome a big round of applause for Mrs. Seema Gupta. Thank you, Anchal. Namaskar. Respected Shri Gyanchand Gupta ji, Speaker Haryana Vidhan Sabha, Dr. Baljeet Kaur, Director Family Health Welfare Punjab, Dr. Pam Rajput, known academician, international activist, and really I'm honored. Mrs. Deepika Bahari ji, President of Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, UT Chandigarh. And esteemed presidents, vice presidents, respected executive council members, and lovely guests and audience. It gives me immense pleasure to welcome you all to this beautiful conclave, which was an initiative taken by Ms. Deepika Bahari ji. Ms. Deepika Bahari ji is an ideal leader whose guidance and support has helped us in carving out activities with our respective councils and also come together as an entire family, that is Chandigarh chapter. I am feeling short of words to explain the exemplary women that Ms. Deepika ji, she is proud mother,
wife, a good teacher, academician, and successful entrepreneurs, Antraja, and multitasker, all in all, a wonderful leader who leads not alone, but with all of us together. That's why we are here. One quote, Yatra narastu pujante ramante tatra devta, yatrastu na pujante sarvastapala triva. Where women are worshipped or honored, deities stays there. अर्थात जहाँ पे स्त्री का पूजा होती है उसका मान सम्मान होता है, देवता निवास करते हैं. This doha is very much applicable here, where all Chandigarh Council encourages women entrepreneurships and wishes women great good health. As we can see, this is health conclave and wellness. And along with their families, like we are not women alone, with better halves, and my team has mom-in-law and mothers also. And Miss Shivangi from Skill Development Council and a choreographer from Ashiana Children Home, she just showed Ardhanarishwar. Thank you for that. Thank you, Miss Bahari ji, for tremendous support and hard work, which keeps us active and motivated to do more for our society and for underprivileged especially. I now invite Ms. Bahari to please come on the stage to kindly receive a token of appreciation from our Chandigarh Council. Thank you. Thank you so much. I would like to call Dr. Baljeet Kaur and Dr. Pam Rajput up on the stage for the felicitation process. Thank you, team. WICCI Chandigarh. I'm speaking on your behalf. This is not for me. You all make me a good leader. A big round of applause for our beautiful President, Mrs. Deepika Bhari. Come on, some shootout. Woohoo! Yes, ma'am. I wish I could have, when I'm your age, I could just get even. 3 cheers for Deepika. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Just one announcement for the young council people over here, whether they are well-being or legal or psychology. I'm going to run Young Feminist Leadership program from 1st of September to 5th of September. The age group is 18 to 30. If any one of you are willing to come and join, you are most welcome. Plus, 18 plus. So, you can take my number from Deepika ji, and you are most welcome. But no spamming. Don't send spam messages to her, please. Thank you so much, Dr. Pam Rajput and Dr. Baljeet Kaur, and I wish I could have even 50% of this energy when I'm your age. I would be blessed. Thank you so much. Alright, and now I would like Mrs. Deepika Bhari to please take up the stage and say a few words. Thank you. Yeah, firstly, I don't have the words after listening to my wonderful speakers. But yes, one thing I would like to put in, जब आप कभी अगर फ्लाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ अनाउंसमेंट क्या होती है कि दूसरे की मदद करने से पहले अपना मास्क पहनिए. So just one line for my beautiful girls over here कि आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, ऑफिस में भी सबका ध्यान रखते हैं, तो उनका ध्यान रखने से पहले हम एक मास्क पहनेंगे, यानी अपना ध्यान रखेंगे, so that we are in a better position to look after them. So you promise me all this.
Second thing, I just want to put a real example over here. That person is in the hall and she knows I'll be talking about her. But yes, I want to quote her. I was constantly messaging her. She was not responding. Calls also, she was not responding. And after a month, I got to know that she was in depression. So here I take it was not her fault, it was my fault. Why didn't I just drove my car into her driveway and say, where are you? Why aren't you responding to my calls? So ladies, we are just not merely sitting over here, selling ourselves, promoting our businesses. We are here for each other. So whenever you feel one of your council members is not responding, just call her randomly. Are you too busy for a cup of coffee? Either call her or you can go yourself. That's it. Thanks a lot. Yes, now never ending. I am on the mic. I said I won't be speaking much. ये कॉन्क्लेव 29th को था पिछले महीने की एंड जब मेरी डॉक्टर राजपूत से बात हुई तो शी सेड आई एम अब्रॉड एंड मैं ऐसे अगस्त फर्स्ट वीक में इसको पुश करना चाहती हूँ. आप सबने मेरे को ऑलमोस्ट hundreds messages डाले, what is this, why are we pushing the event, and now do you all say it was worth it? Yes. Yeah. So big round of applause for my speakers. Thank you so much, and I think the thing that ma'am just said, that when somebody from your council is not responding, please just go and write back. I think that's what I do. I keep pushing my council, where are you guys? Where are you guys? So I think, yes, we actually need to do that, to just see if they are doing good or not, why actually they're not responding, if there's actually a problem or not, or they're just hiding from not doing the work. Okay, thank you so much, ma'am, for the great words. And now we will start with the felicitation of our honorable guest speakers. So, बार-बार बुला रहे हैं मैम, हम आपको सॉरी मैम, मेरी 2 कप ऑफ कॉफी भी कम करके 0 पे मिनट करना प्लीज. Okay, so please welcome Dr. Pam Rajput and Dr. Baljeet Kaur up on the stage for the felicitation, and it was very, very insightful and some valuable statements that both the energetic ladies have provided us here today. Thank you. A big round of applause. Huge round of applause to Dr. Baljeet Kaur, my beautiful people. And next up, Dr. Pam Rajput. A huge round of applause for the most energetic lady that I've met today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And now there was a few awards that were left, so I would now like to call ANB News Mr. Rakesh Gupta to please come up on stage and take up the felicitation process ahead. He's doing the live coverage of the whole event on ANB News. Thank you so much, sir. Mr. Rakesh Gupta, huge round of applause. Thank you so much, Mr. Gupta. Thank you so much, sir. And next we have Ms. Shivangi Bansal, who have actually given a very mesmerizing performance in the very beginning of the event. Thank you, Shivangi. It was indeed beautiful.
Thank you, Shivangi. Thank you, Dr. Pam Rajput. Thank you, Dr. Baljeet Kaur. Thank you, Mrs. Deepika. You all. Yes, ma'am, surely you can say thank you and sorry for bothering. Thank you so much for all the day. And I'm just reminded of Baljeet Kaur recently. तुसी सुनया होना US ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ video ਬਣਾ ਕੇ and see, I just want to tell you one more thing since the whole talk was going on and on. All of us at least can pledge ਕਿ ਅਸੀਂ strong ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, don't harm your own self. Just one thing, that first set an example for yourself and be that strong example ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ I can also do it. Very rightly put, speaking up because it's not a sign of weakness, surely. So here we are ending all our discussions with the right note, and I'm sure we have a lot of takeaways tonight with us for navigating and adapting better for our well-being. On that note, thank you so much everyone for being present over here today. We really respect and value your time and efforts. Also, we would like to thank the event company CII who helped us put this event together. Thank you all the light technicians, sound technicians, the hospitality people from the hotel. This is me, your host, Aanchal Sharma. And Harleen Bahari. Signing off, Sat Sri Akal. Thank you so much, and all of you can please proceed to the basement for the high tea. Thank you.